Good morning, students. So let me just share the screen. Just give me a minute, then we will start. If you have any doubt in yesterday's lecture, and sorry, I forgot to upload this on a YouTube. I'll upload it today. So if you have any doubt in Clipper, then you can ask. Otherwise, we'll move to the next topic. So just a second. I'm open the PPT. Yes. Yes. So Clipper circuits we have already done. The next topic is clamper. Okay, just a second. Yes. So I am assuming that no doubt in Clipper. So, okay. Next topic is clamper circuit. So this is also an electronic circuit which is used to shift the waveform to a different AC level. So let's say, suppose sometimes, let's say the wave is coming 10 volt to 10 volt. Okay, like this. Let's say this is the wave coming. Let's say this is 10 volt and this is minus 10 volt. And for a particular application, we don't want this kind of a wave. We don't want minus 10, let's say in this. What we want is, we don't want minus 10, and we want in positive, we want plus 20, let's say, not 10. Okay, and let's say 15, or let's say 25. This we want in the positive side. So what we need to do is, we need to clamp this input waveform to some other level. Okay, हमें इसको यहाँ से निकालना है, and we need to clamp it at somewhere else. So like this. So 20 and let's say 0, like this. We need to make it like this. So this is 20 volt and this is 0 volt. We don't want negative. Also, we want positive side 20 volt instead of 10 volt. This is known as a clamping. We can clamp it to 25 also. We can clamp it to 30 also. We can clamp it to 40 also. No problem. Let's say this. We can clamp it to 30 also. 30 volt like this. Like this. So 30 and it is 10. Remember, in clamper circuit, the total DC level, the total swing. Okay, what was the initial swing? Initial swing was plus 10 to minus 10, meaning the total swing was 20 volt. Okay, so remember, in clamper circuit, doesn't matter at which level you are clamping it, but the total swing will remain unchanged. The total swing will remain 20 volt. So if we are clamping it to a 20 volt, definitely the lower level will be at 0. So the total swing will be 20. If you are clamping it to 30, the lower level will be at 10. So again, the swing will be 20 volt. Okay, so this only single line can help you in numeric, let's say multiple type question answers. Okay, MCQs में ये आपको एक single line ही help करेगी. Let's say कोई question दे दिया. Let's say you have a question something like this, which is going from 5 to minus 5, and a clamper circuit दे दिया बहुत बड़ा सा clamper circuit. Okay, and then they have asked what will be the answer. So no need to solve it completely. If let's say there are three answers are something like this. Let's say 15 to minus 5. And let's say the another question, the another answer is, let's say 10 to minus 5. And let's say the another is 20 to 5. And let's say the another is 10 to 0. So immediately we will be able to tell that which is the answer, because the total swing here in the question is 10 volt. Okay. However, in case of a first answer, the total swing is 20 volt, because 15 and 5 in the minus side. So total 20 volt swing. In this also the total swing is 15. In this also the total swing is 15, because 20 to 5. Only in this the total swing is 10. So the answer is this. Okay.
So this kind of a trick can be used in MCQs. Okay. So without changing the shape of the input signal is known as a clamper circuit. Okay. So this is known as a clamper circuit. Now, this is the example V2 minus V. Peak to peak voltage is 2 volt. Okay. And you have a clamper circuit. So what you can do is you can shift it to any other volt. But remember, peak to peak voltage will be 2 volt only. Okay. Here also you can clamp it to negative voltage, but the total peak to peak has to be 2 volt only. Okay. Now, how does a clamper circuit work and how should we analyze this? Okay. हम अगर हमें clamper circuit दिया है, so how should we analyze it? Okay. So in clamper circuit, capacitor is there. How to identify that this is a clamper circuit? There has to be a capacitor along with a diode. Okay, if capacitor is there and diode is there, that circuit is known as a clamper circuit. Okay, so in this selection of R and C should be important here. Effectively, tau must be sufficiently large. Okay, so whenever you are designing such circuits, this R and C should be selected so that in such a way, so that the toe must be sufficiently large. I'll tell you the reason why the toe has to be large. I'll tell you the reason, no problem. Okay. Now let's say this is a circuit. This I'll tell you. Okay. Don't worry. Sufficiently large क्यों होना चाहिए? I'll tell. No problem. First, let's understand how to analyze it. Okay. So let me put here question mark so that I'll be able to tell you in the last. Let's say this is a circuit and you have a V input where the input voltage is going from plus V to minus V and it's a kind of a square wave. And this is the circuit where one capacitor is there, diode is there, it's parallel to the output voltage, the resistance, load resistance is there, and V input you are applying here. So always you will come across with this kind of a circuit. In this also, you may have the battery, additional DC battery also. Okay. Here you may have a battery. Here you may have a battery like this, or you may have a battery like this, and you may have the battery over here, or you may have the battery over here like this. So battery may also be there. Okay. So if you wanted to clamp it some other level, you definitely require a battery. If let's say you have a V plus V to V, V to V, and let's say you don't want to clamp it to 2V or minus 2V. Okay. If अगर आप 2V पे clamp करना चाहते हैं, no need to have a battery. Okay. I'll tell you the reason. Plus V and minus V, and simply you wanted to clamp it 0 to 2V, no problem. There is no need to have a battery. And also, if you want to clamp it to 0 to minus 2V, again, there is no need to have a battery because this circuit is sufficient to make this kind of a clamping. But let's say if you wanted to clamp it at some other voltage, जो total swing है उसका उससे अलग किसी voltage पे इसको clamp करना चाहते हैं. Let's say you wanted to clamp it 3 volt to 1 volt, 3 volt to 1 volt. Then you will be requiring an additional battery over here. Okay. Whatever the total swing, जो total swing है उस total swing पे let's say plus V and minus V, 2V पे आप clamp करना चाहते हैं, either 2V पे or minus 2V पे. Then you do not need to have any battery. But if you want to clamp it 3V, 4V, 5V, so that extra V from where you will take, so that extra V is needed, and for that you needed a battery over here. Okay, so now how to analyze this circuit? So in this, the first requirement is identify the half cycle that makes diode forward bias. Okay, so we have to start the analysis. We have to start the analysis only in the cycle which makes the diode forward bias. Starting forward bias से करनी है, starting reverse bias से नहीं करनी. जैसे for example, अगर यही circuit clipper का होता, so clipper के circuit में if you have this input and you have a clipper circuit, so even if the diode is in a reverse bias in first half cycle, we start the analysis, no problem. We start the analysis, we make it open and we find out the output, what is the output, and then we draw the output. Okay. In clipper circuit, there is no such condition. Even in the first half cycle, the diode is in a reverse bias, we can start the analysis. But in case of a clamper circuit, remember, very, very important,
don't start the analysis if the first half cycle is makes the diode in a reverse bias. If the first half cycle makes the diode in a reverse bias, don't start the analysis. You just draw the line over here and you can simply write since diode is in a reverse bias, so leaving this cycle. So leaving this cycle. वो cycle आपने छोड़ देनी है. Okay. You have to start the analysis from the cycle which makes the diode in a forward bias. So obviously if the first cycle does not make it in a forward bias, so obviously the second half cycle has to make it in a forward bias, definitely. So you need to identify that whether the first half cycle is making the diode in a forward bias or not. If it is making in a forward bias, you need to start the analysis. Okay, don't worry, I'll just explaining everything and then I'll solve one example. Okay. If it is in a forward bias, let's say if the first half cycle makes the diode in a forward bias, like in this case, whatever the example is shown over here, in this case, the first half cycle only makes the diode in a forward bias. No problem, because this is a positive. So this end is P, this end is N. So P is connected to positive, N is connected to negative. It's making in a forward bias. Okay. If it's making in a forward bias, apply KVL and find voltage across capacitor and V naught. Clipper के circuit में हम क्या करते थे? As soon as you find it that the diode in a forward bias, you only find the V naught. You have only one voltage to find out. You only find the V naught. But here, in case of a clamper, you need to do two things. Number one, you need to find out the voltage across capacitor, and you need to find out the voltage across V naught. These two things you have to do in the very first step. Okay. Now, this is done. First half cycle is done. Positive half cycle is done. Where the forward bias, diode is in a forward bias, that is done. Now, select the remaining half cycle and find V naught. Then go to the reverse one. Again, then go to the reverse one. Okay, so reverse one जैसे मान लो आपने पहली छोड़ दी. Let's say the wave is something like this. पहली छोड़ दी. Second में आपने analyze कर लिया. Third cycle में जाए and then select the remaining half cycle and find V naught. And then V naught find out कर ले again by applying the KVL. Okay, I'll tell you how. Plot the output waveform as per second and third. जो भी आपका second में V naught आया हो और जो भी third में V naught आया हो, then you can draw the output. Okay. Now let's start the example. And then in that example, I'll tell you why RC is sufficiently large as needed and how does this clamper circuit works. Okay. So now let me take the example. So let's say this is the previous one only, the example. This one is the example. Okay. So now let me start the analysis. बहुत ध्यान से समझना इसको, फिर बाद में अदरवाइज समझ में नहीं आएगी, वो बहुत लंबा टॉपिक है, आप कहोगे दोबारा समझा दो तो वो बड़ी दिक्कत होगी. इसलिए एक एक जगह पे जहां पे भी समझ में ना आए वहीं इमीडिएटली मुझे रोक कर आप पूछ लेना इन बिटवीन. ओके. Now, what is the first step? The first step is we have to check whether the diode is in a forward bias in first half cycle or not. Okay. So in this particular example, in the very first half cycle, the diode is in a forward bias. Okay, because this is positive and this is negative. So this is P end and this is N end. So the diode is in a forward bias. Okay, no problem. Now what I told you, if the diode is in a forward bias, you have to do the analysis and you have to find the voltage across the capacitor. Also, you have to find out the voltage across V naught. These two things you have to do. Okay. So now, as soon as this diode becomes forward bias, meaning it becomes short. So your circuit will be something look like this. Your circuit will something be look like this. I think there is no problem in this. Yes, this is R, this is diode, and there is a voltage of V. So this voltage V is applied over here. There is a capacitor and this path is closed and the current will flow in this path only. Why? Because this R is chosen in such a way that R is very, very high. Okay, हम इसको choose ही करते हैं अपने हिसाब से कि R is very, very high.
So definitely the current will flow in this path because diode is in a forward bias. It will not offer any resistance, zero resistance almost. Okay. So what it will do, it will charge the capacitor. It will charge the capacitor because at the time RC will be very, very small. Because now your R is this, your R is not this, your R is this, because this is the charging path. RC will be very, very small. So the capacitor will charge immediately. As soon as you will apply the voltage V, this capacitor will charge to voltage V very, very fast. Okay. Now apply KVL and find what is the VC. So can anyone tell me what will be the VC? VC equal to? Q by V. Not Q by V, VC equal to V. This VC is a capacitor voltage. It's not, C is not capacity over here. VC is a capacitive voltage. VC is just to represent, जैसे V not output voltage है, so VC is equal to capacitor voltage. So VC will be charged to V. Because whatever the battery voltage is there, the capacitor will charge to that value immediately. बाकी कहाँ जाएगा? ये पूरा का पूरा ये एक लूप है, आप इस लूप के अंदर लगा लो KVL. So V minus VC equal to 0. So VC equal to V. VC will charge to V level, voltage V. Okay. Remember, the direction of VC also need to be written over there. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज ध्यान से सुनना. 100% इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 4-5 मार्क्स का. एक ही क्वेश्चन आपकी ग्रेड को ए से बी पे ले जाएगा. क्लियर है? इसलिए बहुत ध्यान से सुनना. यहाँ पे आपने डायरेक्शन ऑल्सो शो करनी है. सो सिंस दिस इज पॉजिटिव, सो दिस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम पॉजिटिव एंड द अदर प्लेट विल बिकम नेगेटिव. एंड व्हाट विल बी द वोल्टेज? वोल्टेज विल बी V. ओके. अगर यहाँ पे एक बैटरी होती, मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी होती, लेट्स से, एंड लेट्स से दैट बैटरी वोल्टेज इज VK. नाउ कैन एनीवन टेल मी, जो बैटरी की डायरेक्शन मैंने लगाई है उससे what should be the capacitance of the what should be the voltage of the capacitor? Please repeat the question. V minus VK. Yes, V minus VK. Very good, है ना. अगर यहाँ पे एक बैटरी भी और होती, let's say, अभी तो बैटरी थी नहीं, हो भी सकती है ना. मैंने आपको कहा कि एक बैटरी हो भी सकती है अगर किसी वोल्टेज के ऊपर क्लैम्प करना है. अभी there is no battery in this. अगर if let's say if there would have been a battery over there, what should be the VC? So VC कैसे निकालेंगे? वही सिंपल KVL लगाना है आपने. यहाँ पे एक बैटरी अगर आपकी होती, आप KVL लगाते. तो KVL कैसे लगाते? -2 plus let's say V, +2 minus VC, again +2 minus VK. So ये हो जाता आपका VK. So VC equal to आ जाता V minus VK, है ना. ये मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताई. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये है नहीं, बट मैंने स्टिल आपको एक्स्ट्रा बता दी कि VC क्यों निकाल रहे हैं, कहीं माइंड में ये ना आ जाए कि ये तो हमेशा ही बैटरी V के बराबर होता है. नो. If there will be an additional battery, you need to look at that battery, whether this battery is favoring this or it's opposing this. If it is favoring, दोनों प्लस प्लस की हैं, so ये माइनस हो जाएगा. अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती तो ये प्लस हो जाता. आप KVL निकाल के लगा सकते हैं. So अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. Just a second, because this is not in the question, so we do not need to go into this. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें आएगा तो हम उसको अलग से कर लेंगे. Okay. So what is the first step? Diode is in a forward bias. Yes, in positive half cycle diode is in a forward bias. The next step is find out the voltage across the capacitor. I have applied the KVL. Find out the
sorry, because again it get disconnected. So when I reconnected it, I got muted. So no problem. So yes, so diode is in a forward bias. VC, we have calculated V. So we need to find out the V naught also. V naught also in this cycle. हमें V naught को भी find out करना है. Okay, so what will be the V naught? Can anybody tell me what will be the V naught if this is the circuit? Anybody? V. V तो यहाँ से देखो, V यहाँ से देखो, आपने बहुत सिंपल रखनी है इलेक्ट्रॉनिक्स को टफ नहीं रखना. अब आपके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आउटपुट पे कितने बचेंगे भाई? जीरो. You have only 5 rupees and 5 rupees का आपने जो है वो खा लिया वहां पे जाके कोई चीज. अब तो 5 की खैर कोई चीज आती नहीं है ना. So वो जीरो ही बचे आउटपुट पे. So V voltage, if you have a V voltage and V voltage is got spent over here, so you don't have anything. V equal to 0. ये देखो ना, आप यहाँ पे भी देख लो, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है. तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा और वही यहाँ पर होगा. अब इस लाइन तो, ये तो लाइन शॉर्ट है. If this line is short, so definitely the output voltage is 0. Excuse me, sir. Yes. Sir, but if there is a battery, then output voltage won't be 0. Yes, definitely. Agar if there will be a battery over here of VK volt, then output will be VK. Very good. Yes. Then output would be VK. But since there is no battery over here, this line is get shorted. So V not equal to 0. Okay. Is it clear? Okay. So now we have done half the question. Now आधा question हमारा हो गया. फॉरवर्ड साइकिल के अंदर हमने VC भी निकाल लिया और V नॉट भी निकाल लिया. मैं लिख भी लेता हूं यहाँ पे V नॉट इक्वल टू 0. मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूं कि इन दिस साइकिल V नॉट इक्वल टू 0 वी नीड टू प्लॉट. Now in the reverse cycle, in the next half cycle, since the diode is in a reverse bias, make it open. Okay, so draw the circuit again. So you have DC something like this, plus to minus, and now you have the input cycle something like this, minus to plus, and you have this branch is open. Now you have a resistance over here and you have a V naught output over here. You have to find out. Now वो जो क्वेश्चन था कि sufficiently large क्यों चाहिए R और C. So now we don't want that during the negative half cycle the capacitor, we don't want capacitor to be discharged. We don't want that. We want that, if the capacitor is charged to V level, whenever the reverse bias is there, the capacitor should remain at that voltage. So that's why we have kept R is very, very high. If R is very, very high, C and R we have made in such a way that RC is very, very high. So if RC will be very, very high, discharging coefficient, discharging constant will also be high. So tau will very, very high. Let's say tau is coming in second. Let's say it's coming 1 second. And let's say the frequency of this wave, जो आपने frequency दी है, वो frequency let's say is coming somewhere in let's say this time period is let's say 1 millisecond. So what will be the frequency? If this is 1 millisecond, this is also 1 millisecond. So 2 millisecond will be the time period. So frequency is just 1 by 2 millisecond, meaning 10 to the power 3 and 2 यानी कि 500 hertz. So something, let's say frequency is 500 hertz or even more than that. So that wave is coming only for 1 millisecond. However, the tau you have chosen in such a way, RC you have chosen in such a way that tau is coming 1 second. So 1 millisecond is nothing in front of 1 second. Charge कुछ discharge होगा ही नहीं. 1 millisecond में wave निकल जाएगी. Capacitor को charge discharge होने के लिए लगता 1 second. So what we have to assume while we are solving the questions, that during the reverse bias, the capacitor voltage must be at V only. Because otherwise अगर आप इसको 1 घंटे के लिए रख दो तो धीरे धीरे चूंकि ये वोल्टेज अब अपोजिट हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. So definitely this voltage will discharge the capacitor. अगर ये 4 वोल्ट पे पहले 5 वोल्ट के ऊपर अगर ये चार्ज हुआ था तो definitely in negative first cycle this battery will try to make it 0.
But since you have chosen R in such a way that the opposite current is not flowing so fast, so that this capacitor is not discharging so fast, so what you have to assume is, very, very important, what you have to assume is that in the reverse bias cycle, the capacitor remains at V. If it remains at V, now can anyone tell me what will be the output now in the reverse bias? Anyone? Minus V. Minus V. Okay. Can anyone tell me? कोई और क्वेश्चन, कोई और आंसर, एनी अदर आंसर? अरे why V भाई, why minus V? You had 5 rupees and you have more 5 rupees here. देखो ना, दोनों बैटरी प्लस टू माइनस, देखो लगा लो केवीएल। अरे केवीएल लगाने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? इस लूप के अंदर केवीएल लगा लो ना। प्लस टू माइनस लेट्स से प्लस V, प्लस टू माइनस लेट्स से प्लस V, 2V. And this also plus to minus V naught you are taking, so plus V naught equal to 0, so V naught equal to minus 2V. V naught equal to minus 2V. Why minus V भाई? Loop लगाओगे ना, loop लगाओगे तो you will be getting this V and V added up. And since this is also plus to minus, you are taking plus to minus, and this is also plus to minus. So all are plus, so definitely V naught equal to minus 2V. So in reverse half cycle, you are getting minus 2V. Your answer is there. Now draw the wave. In first half cycle, output was 0, so draw it 0. In second half cycle, the output was minus 2V. So you have clamped it to minus 2V. In third half cycle, again the output is 0. In fourth half cycle, again the output is 2V, like this. So this voltage is 0, this is minus 2V. Is it clear? एक और एग्जांपल देखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा टेढ़ा एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बट टेल मी दिस कि यहाँ तक क्लियर हुई चीजें या नहीं, फिर और भी देखते हैं। यस सर। आई होप क्लियर हो गई होंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर इसमें होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं अपने पास से बनाता हूँ। यस, इसमें है ऑलरेडी एक एग्जांपल और, आइए इसको देखते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, बहुत ध्यान से, इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, एक चीज एक्स्ट्रा नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल देयर आर टू मोर थिंग्स। वन, it's now a silicon diode, so we need to consider 0.7 volt also, number one thing. Number two, one battery VK is also there. Two things are extra in this. Okay, but no problem, डरने की कोई बात नहीं है। We will start our analysis, है ना। इस सबको भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है इसको देखो भी मत। हम शुरू से एनालिसिस करते हैं, इसको देखोगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं क्या कर रखा है क्या नहीं। हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से एनालिसिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रैच लेवल, कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें जस्ट स्टार्ट करना है। ओके, नाउ व्हाट आई टोल्ड यू द फर्स्ट स्टेप, Converting silicon diode to ideal. sorry, silicon okay, so replacing, you are saying that replace the silicon Yes. diode with yes, no, very good. Even yes, I was about to tell that the first step is whether find out the whether silicon diode is in a forward or reverse, but I think that is wrong. You are right. The first step is convert this silicon diode into ideal diode. Yes, very good. Okay, the very first step is convert this silicon diode to ideal diode. Okay, so convert it. Okay, let me take over here. Yes, so this is your capacitor. This is, let's say now I have converted to ideal diode. If I have converted to ideal diode, I need to apply a battery of 0.7, and remember the minus would be connected to P. Okay, and then we have a battery of VK. This is your VK battery, and you have something like this. That's it. If you have done this part, I think most of the problem got solved. This is V naught, this is R, this is now ideal diode, so I am not writing over here silicon. This is VC, you need to find out. Now do the analysis. In the very first half cycle, what do you think? Diode is in a forward bias or reverse bias? And assume that VP is more than VK. No? VP is more than VK. So assume, so now tell me, what do you think? In first half cycle, diode is in a forward or reverse?
रिवर्स बायस। सिंस मैंने आपको पहले बताया वीपी इज मोर देन वीके, है ना। अगर वीपी हमें नहीं पता होता तब तो हमें नहीं पता चलता, बट वीपी क्योंकि हमने अब पावर सप्लाई लगा रहे हैं, सो लेट्स से दिस इज हायर देन वीके। सो इन फर्स्ट हाफ साइकिल डेफिनेटली द डायोड इज इन a reverse bias. Why? Because this end is positive, this end is negative, and since this end is N and this end is P, so P is connected to plus VK, but N is connected to more than plus VK because it's VP. I already told you, let's assume VP is greater than VK. Okay, so definitely it's in a reverse bias. If it's in a reverse bias, do we need to open it and do the analysis? Bolo bhai. No, sir. No, we do not need to do the analysis because जब भी कभी फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में होगा, we will skip that wave, no problem. In next half cycle, in negative half cycle, diode is in a forward bias because P is already positive with VK and N is already now coming negative half cycle. So let me erase this plus and minus over here, and now let me keep here minus and here plus. Now this diode is in a forward bias. If diode is in a forward bias, make it short, find out the VC. So this will be minus, this will be plus. So find out the VC. Find out the VC. So apply VC. So ये plus to minus, let's say I am taking plus, जो मर्जी ले सकते हो आप, कोई भी जैसे मर्जी KVL लगा लो, plus to minus plus VP, minus to plus minus VC, minus to plus minus 0.7, plus to minus plus VK equal to 0. जैसे मर्जी लगा लो आप plus to minus minus लेते हो तो minus ले लो. VC comes out to be VP minus 0.7 plus VK. This is the voltage at the capacitor. So here let me write it, VP minus 0.7 plus VK. And what is the output V0? What is the output V0? So in this you can apply the KVL. In this KVL apply kar lo yaar. So KVL apply kar lo, minus VK plus 0.7 plus V0 equal to 0. So V0 will be VK minus 0.7. Okay, so in this half cycle V0 equal to VK minus 0.7. बहुत ही easy, tough नहीं बनाना है इसको, KVL लगाते रहने और बस छुट्टी, आंसर आ गया, लो आ भी गया आंसर. In next third half cycle, again the diode in a reverse bias. If it is in a reverse bias, ये तो पूरा का पूरा गया. You have only this plus and you have now only this minus, and here you have a VP. This VC will be charged at this voltage only. You need to find out the V0. Apply the KVL in this loop. So apply the KVL, minus to plus. Let's say I'm taking minus VP. Then that minus of VP minus 0.7 plus VK, and then plus V0 equal to 0. So V0 equal to VP plus VP minus 0.7 minus plus VK. Okay, मैंने उसको उधर ले गया V0 को, माइनस 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 कैंसिल कर दिया, सो ये आ गया. सो दिस बिकम्स 2VP plus VK minus 0.7. That is your V0 simply. So draw the output. Simply draw the output. बस कोई दिक्कत ही नहीं है. अब आप इसको ड्रॉ कर दो जहां मर्जी. तो ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है तो ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर टेंशन वाली बात नहीं है. फर्स्ट हाफ साइकिल में छोड़ दो, देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में एनालिसिस छोड़ दो. सेकंड हाफ साइकिल में VK minus 0.7. सो अब VK को आप जो मर्जी एज्यूम कर लो. VK को 2 वोल्ट लेट्स से एज्यूम कर लो. लेट्स से VK इक्वल टू 2 वोल्ट है ना, एज्यूम कर लो. सो 2 minus 0.7 लगभग 1.3 के आसपास ये आपका ये आ गया. VK minus 0.7 का लेवल ये आ गया. ओके, नाउ इन थर्ड हाफ साइकिल व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 2VP. सो VP लेट्स से VP को 5 वोल्ट एज्यूम कर लो कि 5 वोल्ट था, तो 2VP मतलब 10 माइनस VK हमने एज्यूम किया है 2 वोल्ट. नहीं, VK इज VK हमने एज्यूम किया 2 वोल्ट, तो 10 प्लस 2 12 माइनस 0.7 11.3. सो ये आपका आ गया 11.3 पे. और नीचे वाला कहाँ आया? सो VK माइनस 0.7 मतलब 1.3 पे. तो देखो क्या हमारा टोटल स्विंग 10 का आ रहा है, तो क्या 10 का था? यस, हमने 5 वोल्ट एज्यूम किया है VP को, 5 से माइनस 5 वोल्ट है, सो 10 वोल्ट का स्विंग था. 10 वोल्ट का ही स्विंग है, 10 वोल्ट का ही.
बस क्लैंप ये 10 पे नहीं हुआ, ये 11.3 पे जाके हुआ, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल एक 2 वोल्ट की बैटरी है और एक 0.7 की है। सो इफेक्टिवली यहाँ पे 1.3 वोल्ट की बैटरी थी, इसलिए ये 11.3 पे जाके क्लैंप हो। इज इट क्लियर नाउ? अभी भी कोई डाउट है तो इसमें पूछो, हम क्लियर करते हैं कुछ चीज। कोई भी डाउट है बेटे, किसी को भी, इसमें वो होने की बात नहीं है, जिसको भी जो भी डाउट हो वो बताए। सर ये जो V नॉट इज इक्वल टू 2VP प्लस VK माइनस 0.7, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? ये वाला ये, यस सर। हाँ कोई बात नहीं, एक मिनट में कर लेते हैं। देखो देखो, जब डायोड रिवर्स बायस में है तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो रीड्रॉ कर लेते हैं, ये आया इनपुट। इनपुट के टाइम पे ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, क्योंकि हम थर्ड हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में है, थर्ड हाफ साइकिल में रिवर्स बायस में, थर्ड हाफ साइकिल में प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। और ये आपका कैपेसिटर जैसे चार्ज था वैसे ही चार्ज है। कितना चार्ज था? Vp माइनस 0.7 प्लस Vk चार्ज था। एंड देन यहाँ पे तो हो गई ये ब्रांच ओपन। अब ओपन हो गई तो इसमें जितनी मर्जी बैटरी लगी हो, ये तो इनके कोई काम नहीं बचा है, तो सब खत्म हो गई। यहाँ पे यू हैव ए रेजिस्टेंस एंड देन यू हैव ए आउटपुट वोल्टेज here. Apply the KVL. That's it. Just simple. Apply the KVL. Apply कर लो। माइनस टू प्लस आप जो मर्जी लेते हो, चाहे आप माइनस टू प्लस प्लस लेते हो, आप चाहे माइनस टू प्लस माइनस लेते हो, डरने की कोई बात नहीं। ऐसे बहुत से लोग ना कंफ्यूज होते हैं केवीएल में, अरे पता नहीं क्या करें, अच्छा ये तो प्लस की बैटरी थी। जो मर्जी आप एक सिंबल बना लो कि जब भी आप ऐसे केवीएल लूप लगा रहे हो ऐसे, तो माइनस से प्लस में माइनस जो पहले आ जाए वो ले लो, माइनस में पहले आ रहा है तो माइनस ले लो, बस छुट्टी। ऐसे सिंपल बना लो, माइनस पहले आ रहा है तो माइनस टू प्लस माइनस, है ना। और लगा लो माइनस टू प्लस माइनस वीपी, माइनस टू प्लस माइनस वीसी, प्लस टू माइनस प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। सो वी नॉट क्या हो गया यहां से? वीपी प्लस वीसी। एंड व्हाट इज वीसी? वीसी इज वीपी माइनस 0.7 प्लस वीके। सो वी नॉट इक्वल टू वीपी प्लस वीसी की वैल्यू रख दो, वीपी प्लस वीके माइनस 0.7। सो ये कितना हो गया? 2VP प्लस VK माइनस 0.7। इज इट क्लियर नाउ, या और भी कुछ चाहिए? यस सर, क्लियर सर। ओके, किसी और को कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज द क्लैम्पर टॉपिक विल बी एंड ओवर हियर। सो उसके बाद आपने इसके एग्जांपल्स खुद से या ट्यूट के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो करने रहेंगे। सो अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। और कोई अगर आपने कुछ है कि नहीं सर अगर ये ऐसा होता तो कैसे करते, यहाँ पे ये होता तो कैसे करते? सो सर फॉरवर्ड बायस में करंट कौन सी लूप में चल रहा है? फॉरवर्ड बायस में करंट पहले लूप में चल रहा है, पहले। ओके सर। फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये हो गया ना आपका शॉर्ट हो गया, तो जैसे ही फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट हो गया तो इस लूप का रेजिस्टेंस तो कुछ बचा ही नहीं ना, बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो गया एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए ये फॉरवर्ड बायस में क्या कर रहा है, कैपेसिटर को चार्ज कर दे रहा है बहुत फास्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कि एज सुन एज द फॉरवर्ड बायस गेट स्टार्टेड, इमीडिएटली दिस चार्ज, इमीडिएटली कैपेसिटर चार्ज टू दिस, है ना। Yes. इसीलिए हम ये वोल्टेज ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये चार्जिंग होने में टाइम लगा देता तो हम ये वोल्टेज भी ऐसे ड्रॉ करते, 1.3 पहुंच रहा है, यहाँ होता 1.3, पूरी साइकिल खत्म हो जाती और ये 1.3 पे ऐसे पहुंचता। और अगर दूसरी साइकिल में डिस्चार्ज हो जाता तो हम ऐसे वोल्टेज ड्रॉ करते कि 11.3 तो भैया शुरू में था, फिर तो ये डिस्चार्ज हो गया ऐसे, फिर ये ऐसे बनते हैं इसके आउटपुट। सो सिंस हम ये मान के चल रहे हैं कि रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं हो रहा और फॉरवर्ड में चार्ज होने में टाइम नहीं ले रहा, इसलिए हमने इतने स्ट्रेट यहाँ पे वो कर दिए ड्रॉ। अगर इसी को मल्टी सिम के अंदर आप करके देखोगे, और मल्टी सिम के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आप ले लोगे जिसमें आर को आप कम रख दोगे, सो आप देखेंगे कि ये इतने स्ट्रेट नहीं आएंगे आपके लेवल्स। तब आपके लेवल्स कुछ इस तरीके से आएंगे जैसे मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि तब उसको चार्जिंग होने में भी टाइम लगेगा और डिस्चार्जिंग होने में कम टाइम लगेगा। तो जो उसकी वेव हो रही होगी, जितनी देर में वो रिवर्स बायस हो रहा होगा उतनी देर में वो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हम तो क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि एज सून एज द रिवर्स साइकिल कम्स and it goes very fast because the frequency is very high of that input signal as compared to tau. So what we are assuming is the reverse bias cycle के time पर the capacitance voltages remain at the same voltage, है ना। अगर ये सोचो ये घटता चला जाएगा तो आपका V0 इसी के हिसाब से चेंज होता चला जाएगा ना। Yes, sir.
Yes. So this was the clamper circuit. I don't think so I should start now next topic because it's already 9:37. So 3 मिनट बची हैं. अब तो हम नेक्स्ट ही क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्या, अब तो आप जब यहाँ पे आ जाओगे तो हम B308 के अंदर अपना लेक्चर उस दिन कर रहे होंगे, है ना. सब लोगों का स्वागत है. बहुत परेशान हो रहे हैं इतने दिनों से घर में बैठे बैठे. So I think we will meet after Deepavali, and happy Deepavali to all of you. है ना, सबको बहुत अच्छी दीपावली आए. So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Same to you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.